In this lecture, BEE Unit 5, lecture number 1, I am going to start, or I am going to talk about the DC circuit, the basics and energy sources. In the DC circuit, actually, we'll discuss the methods of analyzing a network. Analyzing the network means to find the voltage across a particular branch or current through a particular branch. Maybe we will find these quantities by using simplification techniques, means resistance may be in series or parallel or delta or star, and simplify it. We will use the Kirchhoff's laws to find the current through a particular branch or voltage across a particular branch. We may use superposition theorem, Thevenin's theorem, etc. Okay, so after studying this lecture, first this lecture I am going to start, that is a DC circuit, that is the basics and energy sources. Okay, so after studying this presentation, you will be able to understand the terminology related to the electrical network and concept of energy sources and types of sources. Okay, so here that will be our object. Now, what is electrical circuit? If the circuit or network is energized from the DC source, that network is called as a DC network, or that circuit is called as a DC circuit. If it is excited by AC source, it is called as AC network or AC circuit. Okay. So the analysis of a particular DC circuit or network is done to determine the various responses such as voltage or current, etc. These responses can be obtained by writing the equations based on network theorems and laws. So we can use laws and theorems, and we will find the current through a particular branch or voltage across a particular branch. But before studying this network or before studying this DC circuit, we must know the terminology related with the network. Some definitions or terminology related with the DC circuit, right? So first of all, I will start with the terminology related with the network. Circuit. What is a circuit? You can say circuit is a conductive path through which either current flows or intended to flow. That is called as circuit, right? It is a conductive path through which either current flows or intended to flow. Now circuit कब flow होगा, करंट कब flow होगा, जब वो क्लोज पाथ हो जाएगा. क्लियर? तो अगर आप सपोज करो कि यू आर टेकिंग द लाइक दिस, a voltage source लिया, clear, and this is the resistance, right? Okay, so current will flow or not? Yes, current will flow. Current can, because of the source, current will flow in this way, right? So we can say this is a circuit. It is a closed conducting path. Clear? Either current flows or intended to flow. So this is a circuit. Now इसके बदले में अगर हम एक resistance ले लें like this, right? Sorry, resistance है. This is the two resistances are there, and here it is a wooden piece, insulating material. No source. तो करंट फ्लो होगा कि नहीं? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Because it is not a source. It is a wooden piece, insulating material. Insulating material just like a open circuit. So current will not flow. So current flow होने के लिए क्या condition चाहिए? Source चाहिए and some circuit elements, that is called as parameters, should be there. And it should be a closed path. It should not be open path. अगर यहाँ source है और यहाँ open कर दो आप, because of some switch open कर दो, तो current flow नहीं होगा. It should be closed conducting path. Closed conducting path through which either current flows or intended to flow. Parameters. What is a parameter? Parameters means what? The different types of elements connected in a circuit. कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तीन. रेजिस्टेंस,
inductance and capacitance. These are the three elements, these are the three parameters. So the elements connected in a network are circuit called as parameters. Resistance R, L and C, right? But in case of DC circuit, only resistance is there, no L and C, ये नहीं रहेंगे. बट अगर AC सर्किट है तो तीनों एलिमेंट रह सकते हैं. क्लियर? सो तीनों पैरामीटर तीन है, बट इन केस ऑफ DC सर्किट ओनली रेजिस्टेंस इज देयर. Linear circuit. What is a linear circuit and non-linear circuit? First of all, before studying a linear circuit and non-linear circuit, I want to discuss linear element and non-linear element. So just I'm going to add one sheet here. Clear? और इस sheet में मैं एक काम करता हूँ. इस sheet है. So I'm going to take I'm going to draw characteristics. Clear? And suppose करो this is the voltage versus current in case of inductor L, in case of inductor, right? So in case of inductor, I am going to take I versus V characteristics. Now suppose you are going to increase the voltage, and we know inductor is what? Inductor is a current, it is a energy storage device. It stores the energy in terms of current. We know energy stored equal to inductor में क्या होता है? 1/2 L I square. We have already studied. So energy stored. So it stores the energy in terms of current. So I, अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा. It should be like this. But after some time, after certain time, current will not be increased. Current will be diverted from here in this way. So current will increase, but after some time it is like this. So here, this characteristic not a linear. Up to here it was a linear characteristic, right? After that it is not a linear. Clear? So because inductor was storing the current, but after some time the current will become constant. So this is an inductor is what? A non-linear element. Inductor is what? Non-linear element. Up to certain region it is linear, then it is becoming non-linear, right? Similarly, capacitor C, it stores the energy in terms of 1/2 CV square in terms of voltage. तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करेंगे तो कैसे आएगी? ये आएगा I और ये आएगा V, because it is storing energy in terms of voltage, so we will take on the y axis. It is storing the energy in terms of current, I am taking on the y axis, right? So when you store or when you connect the source, clear? So it will start storing the energy in terms of voltage. Voltage will increase like this. यहाँ तक linear है. Clear? It should be like that, but it is not like this. Voltage will increase, and after some time it will become, it is deviated, and it will become constant, right? It is like that. So this characteristic is what? This is a non-linear characteristic. So I can say L and C may be a non-linear element. Resistance, in case of resistance, it is not energy storage device, it is a energy consuming device. Clear? So अगर आप from Ohm's law, V is proportional to I, or you can say I is proportional to V. So V equal to I equal to V equal to I into R. So what about the R? V upon I. I got R. So R is a, अगर आप यहाँ पर suppose करो you are going to draw increase the V current, this is current. Yeah, you can say I, you can say V here. कुछ भी ले सकते हैं. Okay. So if you draw it, it is like this. इसका मतलब क्या है? If you increase the voltage, this is the current. If you increase the voltage, this is the current will also be increased. If you increase the voltage, again current will also be increased linearly, means the value of element is constant. Constant means what? If you increase the voltage, current will increase proportionally. So दोनों increase हो रहे हैं proportionally, तो क्या होगा? R will be constant. The value of element is not changed with the change of voltage or current. इसको क्या बोलते हैं? Linear element. Resistance is what? Linear element.
if you increase the voltage, current will also be increased linearly. That element is a linear element, right? So we know what is a linear element, what is a non-linear element. Okay, so I'm coming back here. So what is a linear circuit? If the network consists of all parameters are linear in nature, that is called as a linear network. If the network consists all elements of linear in nature, means all elements are resistance, that network is called as linear नेटवर्क और लीनियर सर्किट. नॉन लीनियर क्या होता है? एक भी एलिमेंट नॉन लीनियर नेचर का आ गया सर्किट में, that network will be non-linear network or that circuit will be non-linear circuit. Okay, clear? So please be careful about it. What is a linear circuit? What is a non-linear circuit? And before that, you must know what is a linear element and non-linear element, right? Okay. So I'm going to rub it. Now, active network and passive network. What is an active network and passive network? Active network means what? If the network consists source of energy, that network is called as active. एक भी source of energy क्या होता है? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, कुछ भी एक सोर्स होता है, अगर वो प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव नेटवर्क. फॉर एग्जांपल ये सोर्स है और ये रेजिस्टेंस है. सो दिस इज ए सर्किट. कौन सा सर्किट है? एक्टिव नेटवर्क. क्यों? सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज एक्टिव नेटवर्क. एक और होता है करंट सोर्स, it is represented like this. This is represented by voltage source, right? This is a current source. Okay, if it is present और यहाँ आपका R है. Okay, so that network is also a एक्टिव नेटवर्क. क्यों? सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है, कम से कम एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको बोलेंगे एक्टिव नेटवर्क. दो हैं, तीन है, चलेगा. मे बी वोल्टेज सोर्स, मे बी करंट सोर्स. सो दैट नेटवर्क इज कॉल्ड एज एक्टिव नेटवर्क. द नेटवर्क active network is one which contains one or more than one source of energy, right? Active network. Passive network क्या होता है? Network is said to be passive if it contains no source of energy. एक भी source of energy नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? Passive network. For example, मैं एक example ड्रा करता हूँ passive network का. No source of energy like this. Inductor like that. Like this. Like this. Now I have drawn 4 net circuits, right? 1, 2, 3, 4. So what is this? Is it passive network? No source of energy. Yes, no source of energy. So it may be a passive network, but it is okay. We'll discuss this. First of all, tell me what is this? This is a resistance, right? And this is the capacitor, and it is charge condition में है. प्लस माइनस बना मतलब इट इज अंडर द चार्ज कंडीशन. चार्ज कंडीशन में तो क्या है? ये सप्लाई करेगा करंट लाइक इन दिस डायरेक्शन. सो करंट विल फ्लो. इसका मतलब क्या है? सर्किट है कि नहीं है? यस, इट इज ए सर्किट. वी हैव स्टडीड आइदर करंट फ्लोज आर इंटेंडेड टू फ्लो. पहला बताया था सर्किट क्या होता है? इट इज ए क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच आइदर करंट फ्लोज आर इंटेंडेड टू फ्लो. तो यहाँ करंट फ्लो हो रहा है. यस, बिकॉज ऑफ व्हाट इज दिस? इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी? नो, इट इज ए एलिमेंट एंड स्टोर्ड कंडीशन में, चार्ज कंडीशन में. सो करंट विल फ्लो. सो दिस इज ए पैसिव नेटवर्क, राइट? व्हाट अबाउट दिस? करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. कोशिश होगी क्या? नहीं होगी. सो इट इज नॉट ए सर्किट, इट इज नॉट ए पैसिव नेटवर्क. हियर आल्सो करंट फ्लो ही नहीं होगा. क्यों? चार्ज कंडीशन में नहीं है. नो, यहाँ पर भी आर और सी दिए हैं, पर अगर सी चार्ज कंडीशन में नहीं है तो करंट फ्लो होगा? कोशिश होगी? नहीं होगी. सो दीज आर नॉट ए network or circuit. They are not a active, they are not a passive network, but this is the passive network. Why? It is under the charge condition, उसके कारण current can flow for some time. Clear? So it is clear what is a passive network. Unilateral circuit. What is a unilateral circuit? The element
यूनिलैटरल एलिमेंट बोल सकते हो या सर्किट. व्हाट इज ए यूनिलैटरल एलिमेंट? अगर करंट इट एलिमेंट, अगर आपका ये एलिमेंट है, this is the diode, current can flow in this direction, right? but अगर यहाँ आपने सोर्स ऐसा लगा दिया तो करंट कैन फ्लो इन दिस डायरेक्शन, राइट? सेम एलिमेंट है आपका, डायोड है, और आपने सोर्स बदल दिया, डीसी सोर्स आपने उल्टा लगा दिया ऐसा, तो ये सप्लाई ऐसा करेगा करंट? It will allow the flow of current in this direction or not? No, it will not allow. It allows the current only in one direction. So this diode is what? Unilateral element. It allows the current only in one direction. That element is called as unilateral element, right? Silicon diode, vacuum diode like this, rectifier, they are called as unilateral element. Bilateral क्या होता है? एक resistance है, right? Source ऐसा लगाया आपने. Will it allow the flow of current in this direction? Yes, it will allow. सपोज सेम एलिमेंट है, आपने इसको सोर्स को इंटरचेंज कर दिया इन दिस डायरेक्शन, current will flow in this direction or not? Yes, it will allow. So this resistance is what? This resistance is what? Bilateral element. Clear? Inductor क्या है? Bilateral element. But कैपेसिटर क्या है? वो दो टाइप के कैपेसिटर होते हैं, डीसी और एसी. और डीसी अलाउ करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, क्लियर? और एसी का कैपेसिटर होता है ना पॉलिएस्टर टाइप, वो क्या करता है? इट अलाउज द करंट इन बोथ डायरेक्शन. सो वो पॉलिएस्टर टाइप कैपेसिटर क्या है? बाइलेटरल. क्लियर? ओके. और इंडक्टर क्या है? बाइलेटरल. रेजिस्टेंस क्या है? बाइलेटरल. इट अलाउज द करंट in either direction. Clear? Example, transmission line. What is a transmission line? Current can flow in either direction, so it is a bilateral element. Okay, so is it clear what is unilateral, bilateral, active network, passive network, like that? Okay. Okay, node. Now before studying further for analysis, we must know node, branch and loop. Node, branch and loop. So what is a node, what is a branch, what is a loop, I will discuss. I will take a separate sheet here. I am taking here. Just मैं इसको रब कर देता हूँ. I am rubbing it first. Okay. And what is a see here. I am taking node. Suppose I have one branch. I am going to draw this. So this is R1, R2, this is R3, this is R4, this is R5. So this is a network and this is the voltage source, energy source, right? So first of all, what is a node? Node, it is simple definition. Node means what? It is the, I am going to draw the node. What is a node? Node means it is the junction, it is the point where the current divides. पहली condition क्या है? Current should divide, current divide. That point, that branch is, that node is called as, that is called as node. The point or junction, clear, where the current divides. So पहली condition you can say यहाँ से current आ रहा है, right? Current यहाँ आएगा, यहाँ करंट आ रहा है ऐसा, राइट? यहाँ आने के बाद करंट विल डिवाइड हियर एंड हियर. सो दिस इज ए नोड. यस, इट इज नोड नंबर say 1. Current will come here, clear, and it will divide here. Here current divide हो रहा है ना, यहाँ और यहाँ, clear. So this is the node number 2. यहाँ मैं एक और ब्रांच बना लेता हूँ, जस्ट थोड़ा सा एक ब्रांच और बना लेता हूँ. ओके, लेट अस से R6.
Clear. Now at this point, current is dividing here and here. Yes, current is dividing. So this is node number 2. 2 ki 3, it is 2. Please be careful about it. Two conditions are there. पहली condition क्या? Current should divide, and second condition, there should be potential difference. Potential difference. Now just tell me at this point and this point, is there any element? No, no element. If element is zero, some current flow हो रहा है तो voltage drop कितना हो जाएगा? Zero होगा, because voltage drop क्या होता है? V equal to IR. एलिमेंट की वैल्यू जीरो है, शॉर्ट है ना वो, सो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? जीरो. वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा तो पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट एंड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट शुड बी सेम और डिफरेंट? इट इज सेम. Clear? So that second condition is not satisfying. There should be some potential difference. इसका मतलब ये है, अगर पोटेंशियल यहाँ का और यहाँ का सेम है तो ये दोनों एक ही नोड है, दोनों नोड नहीं है. ओके. अच्छा, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा, तो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, लेकिन ऑल आर सेम नोड और डिफरेंट नोड? सेम नोड. क्यों? ये सब जगह नोड है, एक ही नोड है. क्यों? देयर शुड बी सम पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर? सो आई हैव कितने नोड हैं? 1 2 एंड दिस इज 3 3 3. दिस इज 3, you can say this is 3, this is 3. So no need to show a different. Clear? So we have 3 nodes. कितने नोड है? नंबर ऑफ नोड्स आर कितने हैं? 3. Out of these 3, one will be connected to ground always. अगर आपने नेटवर्क को ग्राउंड नहीं किया, सर्किट को ग्राउंड नहीं किया, फ्लक्चुएटिंग करंट विल फ्लो, कुछ भी होने लगेगा. you will not be in position to take the readings, right, if you are doing some practical. So this is connected to ground. And generally कौन सा टर्मिनल ग्राउंड करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स विल बी कनेक्टेड टू ग्राउंड इन जनरल, राइट. अगर इसको ग्राउंड कर दिया है तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट ग्राउंड? जीरो. Clear? So out of 3 we have 2 nodes. Clear? And one is connected to ground. So इसको बोलते हैं रेफरेंस नोड, ग्राउंड नोड, अर्थ नोड और डेटम नोड. Clear? So this is called as ground node or earth node or reference node or datum node. This. So we have 3 nodes, 1 2 3, and out of these 3 one is connected to ground. Clear? So क्या कंडीशन है नोड की? There should be some potential difference, पहली condition, and there should be division of current. Current should divide. Okay. So what is a node? It is the point or junction where current divides. Okay. Now branch. Simple definition: the part lies between two nodes. It is very simple. The conductive part. Okay. Sorry. It is conductive path. It is a conductive part lies between two nodes, or the branch connected between two nodes. So node number 1 and 2, this part is connected between 1 and 2, 1 and 3, sorry, 1 and 3 के बीच में ये part है क्या? Yes, it is a branch, right? 1 and 3 के बीच में another resistance है ये, it is a branch. 1 and 2 के बीच में है branch, 2 and 3 के बीच में है branch, ये भी 2 है, so 2 and 3 के बीच में branch, 2 and 3 के बीच में branch. How many branch? 1 2 3 4 5 6. branch कितनी है? 6. Clear? So it is very simple. The part lies between two nodes. Conductive part lies between two nodes. Branch may be pure element. देखो यहाँ पर R2 pure element है, R3 pure है, R4 pure है, R5 pure है. Clear? यहाँ एक और होता मान लो R6 सपोज करो तो ये ऐसा हो जाता. So it may be a pure element or combination of two elements or combination of source and element, or it may be a source only.
So it is a simple definition. It is a part lies between two nodes. So how many branch we have? 6. Clear? Loop क्या है? closed conducting path. Closed conducting path. That is called as loop. कितने लूप है भाई? स्मॉल स्मॉल. आप बोलेंगे एक लूप ये है, एक लूप ये है. नो, अभी इट शुड बी मिनिमम इन नंबर. इट शुड बी, याद रखना, इट शुड बी मिनिमम इन नंबर. मिनिमम इन नंबर मतलब 0? नो, इट इज 1. मिनिमम नंबर क्या होता है? 1 होता है, राइट? सो आप बोलेंगे सर क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इट शुड बी मिनिमम इन नंबर. पहला मैंने बोला, आप मिनिमम बोलेंगे सर ये लूप ये ले लेते हैं, हो गया खत्म? नहीं. ये आप बोलेंगे सर एक लूप ये ले लेते हैं, ये भी नहीं चलेगा. इट शुड बी मिनिमम इन नंबर, पहली कंडीशन है. और सेकंड कंडीशन क्या है? इट शुड कवर ऑल ब्रांचेज. इट शुड कवर all branches. Be careful about it. That is the condition. It should cover all branches. Okay, so इसका मतलब क्या हुआ? एक लूप ये ले लें ऐसा वाला, तो ये रह गई R3, R2, R4, R5. आप बोलेंगे सर एक काम करता हूं ये ले लेते हैं, तो ये रह गया सब. नहीं चलेगा, राइट? तो कभी भी याद रखना छोटे छोटे लूप लो. पहला लूप मैं फिर से बना देता हूं. आई एम जस्ट रबिंग इट एंड देन आई एम गोइंग टू ड्रा इट. मैं रब करता हूं एंड देन ड्रा इट, राइट? This was the V. I think it was like this. It was like this, right? R1, R2, R3, R4, R5, R6. This was the node 1, 1, 2, 3, right? नोड कितने हैं? 3. लूप ब्रांच कितनी है? आई थिंक 6 थी ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6. लूप कितने? स्मॉल. ऑलवेज टेक द स्मॉल लूप. लूप नंबर 1. लूप नंबर 2 small t. Loop number 3. Loop number 4. Clear? So if you see, you can say all branches is covered, right? 4 लूप में. आप बोलेंगे सर ये तो लूप 1 में और लूप 2 में R2 2 बार आ गया, दोनों में कॉमन चलेगा, रिपीटेशन चलेगा, बट इट शुड कवर ऑल ब्रांचेस, राइट? एंड कभी भी याद रखना छोटे छोटे लूप लेना है आपको. कितने लूप हैं? 4. And I have one formula: number of loop equal to number of branch minus number of node plus 1. This is very small formula. Generally examiner ask in some competitive examinations. Number of loops equal to number of branches. कितनी है? तो हमको दिख रहा है लूप 4 हैं, लेकिन देखते हैं ब्रांच कितनी है? 6 है. नोड कितने हैं? 3 प्लस 1 4 ही आएगा. 6 minus 3 3 plus 1 4. Clear? So it is clear what is a branch, what is a node, what is a loop. Okay, so I'm coming back here. Okay, so एक दूसरा एग्जाम्पल था. दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टेंस, दिस इज कैपेसिटेंस एंड दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस. यू कैन से नॉब है मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है. और ये सब डेफिनेशन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड ऑन द शीट, राइट? नाउ एनर्जी सोर्सेस. व्हाट आर द एनर्जी सोर्सेस? See here, energy sources. So we have 2 types of energy sources. Pehla definition, what is energy source? Simple definition. What is energy source? Which gives the current, which supply the current, which
gives which supply current in circuit, which supplies the current in the circuit, or which gives the current in the circuit, which gives the current, right? So we have two types of energy source. One is called as voltage source, other is known as current source. Now what is a voltage source? What is a voltage source? Yes, what is a voltage source? What is a voltage source? What is the difference between voltage source and current source? Voltage source means what? It gives the current. Current source क्या होगा? That will also give the current. So both are supplying the current. Difference क्या है? दोनों में difference ये है, voltage source will also give the current, current source will also give the current, but voltage source में voltage is nearly constant. Supply voltage is nearly constant. Voltage are nearly constant, right? And current changes with the change of load, that is called as voltage source. Suppose करो यहां मैंने एक सोर्स लगाया 230 वोल्ट का MACV का सप्लाई है, और यहां हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, एंड दिस रेजिस्टेंस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट? सो व्हेन यू चेंज दिस रेजिस्टेंस क्या होगा? यहां जो करंट चेंज होगा कि नहीं? करंट विल चेंज, बट सप्लाई वोल्टेज इज नियरली कांस्टेंट. सो MACV की सप्लाई क्या है? वोल्टेज सोर्स. सपोज करो आपने एक बैटरी ली फॉर टाइम बीइंग 12 वोल्ट, और यह आपने एक लोड लगाया तो करंट फ्लो होगा, क्लियर? बट ये रेजिस्टेंस आप चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर चेंजिंग द लोड. वी कैन से चेंज द रेजिस्टेंस मींस वी आर चेंजिंग द लोड. रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो क्या होगा? यहाँ अगर आप मीटर लगाते हैं तो जो करंट है वो भी चेंज होता जाएगा. करंट चेंज हो रहा है बट वोल्टेज इज नियरली कांस्टेंट. अलग बात है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद वो वोल्टेज कम होता जाएगा, बैटरी विल बी डिस्चार्ज, बट फॉर द टाइम बीइंग और for the instant voltage is nearly constant, so that is called as voltage source. What is a voltage source? The value of element is source is constant and current changes with the change of load. इसको बोलते हैं voltage source. Current source क्या होगा? Current will be nearly constant. Supply voltage, the voltage across the element will change with the change of load. That is called as current source. I'll discuss this later on. Now voltage source के टाइप में दो टाइप में, एक आइडियल और दूसरा प्रैक्टिकल. What is a ideal voltage source? This is the voltage source, clear? This is the load, clear? Okay. And when you connect the load, switch on कर देंगे तो current flow होगा I. This is I ampere. Okay. And if you draw load current versus voltage, अगर आप लोड चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ लोड चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा? लोड चेंज करेंगे तो क्या होगा? करंट विल, लोड कम कर, लोड चेंज करेंगे, लोड बढ़ाएंगे तो करंट विल इंक्रीज, करंट बढ़ेगा, बट सप्लाई वोल्टेज विल बी ऑलवेज कांस्टेंट. दिस विल नॉट बी चेंज, क्लियर? सो V इक्वल टू ई. ई क्या है? इंटरनल वोल्टेज है, और V क्या है? एक्सटर्नल टर्मिनल वोल्टेज. सो V इक्वल टू ई मिलेगा आपको कांस्टेंट थ्रू आउट, क्लियर? यू आर चेंजिंग द लोड. इसको क्या बोलते हैं? आइडियल वोल्टेज सोर्स. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, क्लियर? सो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? द सप्लाई वोल्टेज इज नियरली कांस्टेंट irrespective of load or current, and it is because of only internal resistance is zero. There is no internal resistance, clear? So V equal to E. but एक्चुअल में, एक्चुअल जो सोर्स होता है वो कौन सा होता है? प्रैक्टिकल. एक्चुअल सोर्स दैट इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल है, वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस इज देयर. सो आई एम गोइंग टू ड्रा इट just here. Ideal हो गया ये, क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, सॉरी, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, दैट इज ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है? सपोज करो कि आई एम गोइंग टू ड्रा हियर, दिस इज द सेल, दिस इज द सेल, ऐसा कुछ रहता है, क्लियर? और इसके अंदर इस पे लिखा रहता है 1.5 वोल्ट. 1.5 वोल्ट का सेल लाए आप, यू कैन कनेक्ट द लोड हियर, lamp or whatever there, and clear, and you are changing it, clear? So when you change it, so current will change, and if you try it, current versus voltage,
वोल्टेज क्या है इसका क्लास का? सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज, दिस V. So it is like this. This characteristic is like this. Why it is decreasing? Because ये जो वोल्टेज लिखा है ना 1.5 वो E है, इंटरनल वोल्टेज. तो इसके अंदर E है 1.5 वोल्ट, बट इंटरनल रेजिस्टेंस इज आल्सो देयर, राइट? इंटरनल रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे दिस करंट विल इंक्रीज, और V टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू होता है E माइनस I इंटू R, और E कांस्टेंट है 1.5. सो क्या होगा, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे तो I विल इंक्रीज, R इज कांस्टेंट. जब ये बढ़ेगा I तो ड्रॉप होगा अंदर नहीं, voltage drop will be there inside the battery cell. So this voltage is constant, minus ये बढ़ता जा रहा है, तो obviously terminal voltage will decrease. So in case of practical voltage source or actual voltage source, internal resistance is there. Internal resistance क्यों आ रहा है? Because of wires, connecting wires, some electrolytes are there. Because of that, some internal resistance will be there, and because of internal resistance, the drop will be inside there. So terminal voltage will be decreased with the increase of load. Clear? So this is called as practical voltage source. Be careful about it. This resistance is very less. Very less. Internal resistance is less. अगर ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? If internal resistance is more, drop will be more inside, so you will get less voltage. Clear? So terminal voltage will decrease. Some countries, they are not supplying a good quality cells or batteries. They are believing in quantity. They are not believing in the quality. Clear? So if you purchase the Indian cells, say every like that, so क्या है उसमें क्वालिटी है. क्वालिटी का मतलब क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लेस, एंड इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज लेस, ड्रॉप विल बी लेस. ड्रॉप इज लेस मीन्स ये तो कांस्टेंट है 1.5, so you will get more voltage. But in some countries they are supplying the cells without checking. They are believing in the quantity, they are not believing in the quality. इसका मतलब क्या है? उनका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है. इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा रहेगा. वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज विल बी लेस, और टर्मिनल वोल्टेज कम है तो आपको इल्यूमिनेशन यू विल गेट लेस. क्लियर ना? सो दैट इज ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. ओके, so please be careful about voltage source का internal resistance should be very less, and ideally कितना होगा? What is ideally? It is zero. It is ideally zero. very less मतलब जीरो हो गया. जीरो हो गया तो drop will be zero. drop zero मतलब V equal to E, that is a क्या हो गया? ideal voltage source, right? Similarly, current source. Current source, again, what is a current source? Which supplies the current, right? But current will be nearly constant. Voltage will change with the change of load. Current source कौन सा है? Voltage source MACB की supply है, battery है, all are voltage source. Whatever the sources you are observing, it is a voltage source. Current source, have you seen it? No. You can say solar panel, it is example of current source. It will supply the nearly constant voltage current. Transformer, welding transformer, current source. Clear? So we have to design the current source, we have to make it. Okay, so okay, two types again, ideal current source and practical current source. Ideal current source में क्या होगा? You can say this is the current source. Ideal में क्या होगा? There is no internal resistance. Ideal current source में क्या होगा? There is no internal resistance. So if you draw it, sorry, if you draw it, कैसे आएगा current source? Sorry, how to draw it? Current source, ideal current source. This is the voltage we are changing, and this is the current. Supply change करेंगे, load change करेंगे तो voltage will change, current will be constant like this. This is the ideal current source. There is no internal resistance, zero. Clear? Internal resistance, there is no internal resistance. तो internal resistance zero नहीं, it is infinite. I'll tell you why it is infinite, right? Okay. और practical current source में क्या होगा? Practical current source में I'm not going to, just मैं बताता हूँ. Practical current source में क्या होता है? अगर
that characteristic voltage versus current, it is drooping, current is drooping. Clear? That is called as practical current source. So what are the resistance यहाँ present? Internal resistance is there. यहाँ internal resistance कितना है? Infinite, right? So just see the next figure slide. Concept will be clear. You can see here. This is the internal resistance is always connected in parallel. It is not in series. So internal resistance अगर पैरेलल में है इसका मतलब आइडियली कितना है? इनफाइनाइट का मतलब क्या? ओपन रहते ही नहीं है. इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है मतलब क्या? वो इनफाइनाइट मतलब ओपन. इट इज नॉट इन सीरीज. वेरी क्लियर. सो इट इज देयर, ओपन है. बट अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो इट इज देयर, एंड इट इज देयर मतलब कितना? इट शुड बी वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई. इट इज नॉट ए वेरी वेरी लो. अगर लो हो गया तो पूरा का पूरा करंट यहीं जाएगा. क्लियर ना? ओपन का मतलब क्या होता है? आइडियली इट इज ओपन मतलब क्या होता है? पूरा करंट यहाँ से जाएगा नहीं, पूरा का पूरा करंट ऐसे जाएगा लोड में. और वेरी वेरी हाई मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू हियर एंड large amount of current flow through the load, right? So this is the internal resistance, and internal resistance में I versus V characteristic drooping रहेगा. Clear? So this is the practical current source. Ideal and practical current source, right? This is the home assignment. Explain the difference between ideal and practical voltage source. Similarly, explain the difference between ideal and practical current source. Ideally voltage source में resistance is internal resistance कहाँ रहता है? सीरीज में it is 0, and practical में very very less. current source में current source internal resistance कहाँ रहता है? parallel में क्या रहेगा? ideally infinite, और practical में very very high, it is not infinite, right? Okay. Thank you very much for listening me carefully.